Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Can anybody please confirm कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी सर क्लियर है। Thank जी you. सर आ रही क्लियर है। Thank you. Okay, let's start the proper session. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to have a very important day and it's about learning theories. क्योंकि बहुत ज़्यादा theories हैं लेकिन मैंने कोशिश की जो important one है और जहाँ से आपको conceptual clarity आ जाएगी, जो basic मुख्तलिफ areas हैं या मुख्तलिफ approaches हैं towards learning, तो हर एक approach से मैंने एक एक theory select कर ली ताकि आपको basic idea या basic concept जो है वो clear हो जाए. So if similar theories को आप later on फिर study करें, so it will be easy for you to understand and interpret. आज के दिन हम different learning theories को देखेंगे और their applications and implications को देखेंगे. Application कहते हैं how to use them, उसको कहते हैं application. जबकि implications कहते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, इसके advantages क्या होंगे. It's the main difference. दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ है application और one is implication. Application means कि ये जो method है तो इसको आपने किस तरह से apply करना है, किस तरह से use करना है, how to use it. As far implication is concerned, कि if you use this particular specific theory of learning या particular steps of learning, then what will happen? What will be the outcome? इसका फायदा क्या होगा? So हम applications को भी देखेंगे, how to use them, और उसकी usefulness को भी देखेंगे कि इसका फायदा क्या होगा, implications को भी देखेंगे. Basically, there are different views regarding humans. इंसानों के मुतालिक ये आज के दिन में थोड़ी psychology involve होगी, so I request all of you to be very attentive और कोशिश करें कि links बनाए, जो मैं explain करता जाऊं तो आप पहले जो सीख चुके हैं या अगर एक स्लाइड में आप कुछ सीखते तो दूसरे वाले के साथ लिंक्स बनाएं, क्योंकि साइकोलॉजी नीड्स बिट अटेंशन. सो बच्चों के मुतालिक जो 3 फेमस स्टेटमेंट्स हैं या इंसानों के मुतालिक जो 3 फेमस स्टेटमेंट्स हैं, सो दे आर दीज 3. एक है ओरिजिनल सिन, जो मिडिवल, जिसको अगेंस्ट क्रिश्चियन बिलीफ भी कहते हैं. असल में एक क्रिश्चियनिटी बेस्ड एक बिलीफ है. ओरिजिनल को आप वो रियल को के सेंस में ना ले, बल्कि ओरिजिनल के लफ्ज को आप ओरिजिन से ले, आगाज जिसको कहते हैं. यानी इंसान का जो आगाज हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस मिडिवल बिलीफ कि इंसान का आगाज ही खता से या गलती से या गुनाह से हुआ है. मतलब बाबा आदम ने गलती कर ली उस शजर के पास जाकर और वहीं से हम इधर फिर भेज दिए गए. सो बेसिकली इंसान ही यानी इंसान की जो पैदाइश है तो दैट इज फ्रॉम and its origin is from a sin, एक गलती से हुई है, एक गुनाह से हुई है. So they believe चूंकि इंसान पैदा ही खतावार है, so children born into the world as evil beings. तो जो बंदा भी इस दुनिया में आता है तो अपने साथ नेचुरली वो सिंस ही लेकर आता है. और इसके एक्सप्लेनेशन में there are different arguments and they say कि अगर आप छोटे बच्चे को देख ले तो अगर उसके हाथ में छुरी हो तो वो किसी को भी जख्मी कर देगा, अपने आप को भी जख्मी कर देगा. इस तरह अगर सोशल रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर ना हो तो हर बंदा जो है वो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारेगा. He will not take care of the other people feelings, emotions or whatever, all the belongings etc. So they say कि naturally humans are sinful, later on society उनको अच्छा बना देती है. तो society अगर अच्छी मिले तो अच्छे बन जाएंगे, otherwise वो उनका origin ही sin से हुआ है, so they will be sinful throughout. दूसरा जो आप लोगों ने लफ्ज अक्सर सुना होगा, टेबुला रासा, जिसको ब्लैंक स्लेट भी कहते हैं और ब्लैंक टैबलेट भी कहते हैं. दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉन लॉक. अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो तो जॉन लॉक की थ्योरी है वहाँ पे अबाउट ह्यूमंस, और वो कहते हैं कि एज फॉर द लर्निंग इज कंसर्न, ही सेज इंसान की मिसाल बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की है, एक सादा सी स्लेट या प्लेट की है या कागज की है. उसके ऊपर आपकी मर्जी है कि बच्चे से जो भी आप बनाना चाहे. यानी बच्चा पैदाइशी तौर पर ना अच्छा है ना बुरा है, बल्कि आपकी मर्जी उसको आप जो भी बनाना चाहे. सेम थ्योरीज जो बिहेवियरिस्ट हैं लेटर ऑन जिनको हम पढ़ेंगे तो वो भी कहते हैं कि इंसान को आप मोल्ड कर सकते हैं किसी भी तरफ, बल्कि इवन जॉन वाटसन साहब तो
کل بھی میں نے ریفر کیا تھا, ریفرنس دی تھی اس کی. وہ تو کہتے ہیں مجھے بچے دے دیں اور آپ مجھے بتائیں کہ ان سے میں کیا بناؤں, وہی میں آپ کو بنا کے دے دوں گا, لیکن سارا کا سارا ماحول میں خود کریٹ کر کے دوں گا. انٹ گڈنس جو روسو جس کا سلوگان تھا ریٹرن ٹو نیچر, ان کی بھی آپ نے فلاسفی پڑھی ہوگی. تو اکارڈنگ ٹو ہیم ہی سیز کہ چلڈرن آر انہیرنٹلی گڈ. سب لوگ اچھے ہوتے ہیں, انسان پیدائشی طور پر اچھا ہوتا ہے, برا ان کو ماحول بنا دیتا ہے, نمبر ون برا ان کو حالات بنا دیتا ہے, برا ان کو جب آپ ڈپرائیو کرتے ہیں کسی چیز سے تو پھر وہ برا بن جاتا ہے. کوئی بھی بندہ برا نہیں بننا چاہتا لیکن حالات ان کو برا بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ نیچرلی وہ اچھا ہی ہوتا ہے, ہم ہی ان کو برا بنا دیتے ہیں. So these are the three extreme views regarding humans. کہ آپ ان کو اگر بچے آپ کے پاس ہیں تو ایک کہتا ہے کہ اوریجنل سندھ والی کہتے ہیں کہ بچے تو خطاوار, انسان خطاوار ہے یا خطا سے ہی ادھر آیا ہے غلطی کی وجہ سے. سو سب کے سب انسان جو ہے وہ غلطی کی طرف مائل ہوتے ہیں. جان لاک کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کی مرضی سے جو بھی بنانا چاہو, سب بلینک سلیٹ, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا, اس کے اوپر آپ جو بھی لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو. اور انٹ گڈنس روسو کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر اچھا ہی ہے. اب ڈفرنٹ تھیریز ہیں, لرننگ تھیریز. ریمبر ون تھنگ, لرننگ تھیریز جو ہے اصل میں دے آر ڈفرنٹ اپروچز. اب اپروچ کسے کہتے ہیں؟ اپروچ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی ایک خاص اینگل سے دیکھنا یا کسی خاص پرسپیکٹو سے دیکھنا. یعنی مثال کے طور پر کسی ملک کو آپ اسٹڈی کریں, ملک کے حالات کو, بلکہ ایک چلے چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, ایک انسان کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو انسان کو یا تو آپ اس کے سوشل سیٹ اپ کے ایسپیکٹ سے یا پرسپیکٹو سے اسٹڈی کریں تو آپ کے اپروچ سوشل ہو گیا. اگر آپ مینٹل پروسیسز جو ہے وہ ان کے چل رہے ہیں تو آپ نے سائیکولوجیکل اینگل سے یا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بندے کو اسٹڈی کر دیا. اس طرح جو لرننگ تھیریز ہیں تو انہوں نے مختلف پرسپیکٹوز یا مختلف اینگل سے انسانوں کو اسٹڈی کیا اور ان مختلف اینگلز کی بنیاد پر مختلف اپروچز کی بنیاد رکھی گئی. اب کس طرح سے مختلف اپروچز کی بنیاد رکھی گئی؟ Now if you look at these things, ایک ہے سائیکو انالیٹیکل تھیوری یا سائیکو اینالسٹ جو کہتے ہیں جن کو, ایک بیہیویئرل تھیوری ہے, لیکن بیہیویئر تھیوری ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں نے بیہیویئرل تھیوریز پیش کی, سو ان کو بیہیویئرسٹ کہتے ہیں. تیسری جو ہے کوگنیٹو تھیوری ہے, اگرچہ ایک کوگنیٹو تھیوری نہیں ہے, پیاجے کی بھی کوگنیٹو تھیوری ہے, بلوم صاحب کو ہم نے پڑھا تھا, بلوم کی بھی کوگنیٹو تھیوری ہے, اور ان کو پریزنٹ کرنے والوں کو کوگنیٹیوسٹ کہتے ہیں. اس طرح سے سوشل لرننگ, سوشل تھیورسٹ ان کو کہتے ہیں. So these are the different angles or perspectives from which humans are studied, that how they learn. Now if you look at these words, اب سائیکو اینالیٹیکل تھیوری جو ہے یا تھیورسٹ, ان کے جو تھیورسٹ ہیں so they will be studying human minds, اور جو سوشل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے ان کے بیچ میں جو ٹسل ہے, تو اگر انسان کو کوئی شخص مینٹل پروسیسز اور سوشل ایکسپیکٹیشنز اور ان کے بیچ میں ایکویلیبریم لانے کے لیے اگر کوئی اس اینگل سے, اس پرسپیکٹو سے بچوں کو اسٹڈی کر رہا ہے, سو دیٹ پرسن از کالڈ سائیکو اینالسٹ. اور وہ جو تھیوریز انہوں نے پریزنٹ کی ہے تو دے آر کالڈ سائیکو اینالیٹک تھیوری. بیہیویئرل تھیوریز کس اینگل سے دیکھتے ہیں بچوں کو؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ stimulus, how incentives, how punishment, etc. they change or affect the learning process. جو learning process ہے تو کس طرح سے incentives, کس طرح سے gifts وغیرہ, کس طرح سے stimulus وغیرہ learning process کو متاثر کرتی ہے, تو انہوں نے اس اینگل سے دیکھا. یعنی ایک ایسوسیشن قائم کر لی لرننگ کی انسینٹیوز کے ساتھ یا stimulus کے ساتھ. جو کوگنیٹو تھیورسٹ ہیں یا کوگنیٹیوسٹ ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاؤ وی ایکوائر نالج, یا انٹیلیجنس کس طرح سے بڑھتی ہے, یا اسکلز وغیرہ ہم کیسے سیکھتے ہیں, یا نالج ہم کس طرح سے ایکوائر کرتے ہیں. سو the cognitivist focus on that. As far social learning theorists are concerned, جو سوشل لرننگ تھیورسٹ ہے دے فوکس آن کہ ہاؤ سوسائٹی مولڈز اے پرسن. سوسائٹی
या environment किस तरह से बच्चों को मुतासिर करती है. Now this one, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं this one may confuse you. So behaviorist में stimulus response को शामिल करके किस तरह से teaching learning process को effective बनाया जा सकता है, they are focusing on this one. And this one is totally depending or focusing on how the environment, just the environment, the learning environment, the social environment affect the learning processes. So here concluding we can say कि psychoanalyst ये देखते हैं कि जब बच्चा learning कर रहा हो या whatever he is responding, या किसी बच्चे के मुतालिक हम कोई राय कायम करते हैं, so वो इस बेस पे कायम करते हैं कि उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशंस उस बच्चे से क्या है. इसी के बेस पर अगर हम किसी बंदे के मुतालिक कहते हैं कि he is unfit for the society. Why is he unfit for the society? Because उसके अपने ज़हनी प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस कुछ और हैं, वो सोचता बेचारा कुछ और है, और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस उससे कुछ और है, तो सोसाइटी कहते हैं कि दिस पर्सन इज अनफिट फॉर अस. दूसरे बंदे के लिए कहा जाता है कि दिस पर्सन इज फिट फॉर द सोसाइटी. व्हाई? क्योंकि उस बंदे की सोच और जो सोसाइटी की डिमांड है वो बिल्कुल they are equal to each others. So that's why now I think this is clear to you कि what is psychoanalytic theory. अब डिटेल में देखते हैं कि साइकोएनालिटिक थ्योरी को देखेंगे, एक बिहेवियरल थ्योरी को देखेंगे, एक कॉग्निटिव को और एक सोशल लर्निंग थ्योरी को. अगर इस स्टेज पर आपसे के ज़हन में कोई सवाल है सो आई विल बी हैप्पी. आप दोनों के पास 1-2 मिनट है अगर कोई सवाल करना चाहे तो, क्योंकि यही से हम बेस बना रहे हैं. यहाँ पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं आई तो लेटर ऑन को क्लैरिटी नहीं आएगी. If okay, then okay. Okay, thank you. अब जाते हैं psychoanalytic theory की तरफ. What is this psychoanalytic theory? जो psychoanalytical theory है, okay, thank you. Chat box में है कि it's clear. शुरू में मैंने कहा था, अभी दोबारा कह दूं कि I need your full attention today, क्योंकि it's such a lot of psychology is involved today. जो psychoanalytical, psycho ज़हनी processes और analysis से निकला है, यानी mental processes की analysis करना, ये theory है. और जिस तरह मैंने बता दिया कि इसका फोकस किस चीज पे है, the children move through various stages confronting conflicts between biological drives या mental processes and social expectations. और उसकी मिसाल मैंने आप लोगों को दे दी कि एक बंदा हम कहते हैं ये इस माहौल में फिट नहीं है. वाई फिट नहीं है? कि उस बेचारे की अपनी सोच और जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है उनके बीच में बहुत ज्यादा फर्क होता है. या हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि इट इज जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है ये बैलेंस पैदा करती है इमोशंस और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच में. नाउ हाउ टू डेवलप दिस बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, उनके जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनके और सोशल सोसाइटी की जो डिमांड है उनके बीच में किस तरह से बैलेंस कायम करेंगे. सो दिस साइको एनालिटिक थ्योरी इज फोकसिंग ऑन दैट वन. जो सबसे मशहूर थ्योरी है इट इज ऑफ सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899 में, और उसी के अंदर उन्होंने 3 डिफरेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर ली. 3 डिफरेंट एंगल से इंसानों के मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया. कौन सा था? नंबर 1 था लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, एंड नंबर 3 psychoanalytical developmental stages. So 3 areas उन्होंने identify कर ली. Number 1, levels of consciousness. I am repeating, 3 different areas को उन्होंने identify किया कि 3 different areas are over there of the mental processes. और वो कौन सी है? एक है levels of consciousness, the other one is structure of personality, personality जो हमारी बनती है तो वो, और तीसरी psychoanalytic और developmental stages. levels of consciousness से मुराद ये है, एक आप लोगों ने, बल्कि let me share with you people,
انسان کے زندگی کا وہ ایک پہلو وہ ہوتا ہے جس کا اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے اور معاشرے کو بھی پتہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو بھی پتہ ہے اس زندگی آپ کے لائف پرسپیکٹیو کا اور سوسائٹی یا لوگوں کو پتہ ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے جو آپ کو تو پتہ ہے لیکن سوسائٹی کو نہیں پتہ۔ تیسرا پرسپیکٹیو وہ ہے جو کہ آپ کو نہیں پتہ لیکن سوسائٹی کو پتہ ہے، اور چوتھا وہ ہے کہ نہ آپ کو پتہ ہے اور نہ سوسائٹی کو پتہ ہے کہ why you do these things. Whatever you do, whatever action you take, if you know why am I doing it, then it means for that actions you are consciousness or that action is in your consciousness. آپ کسی مثال کے طور پر اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ فلاں بندہ آپ کو کیوں کر اچھا لگتا ہے and you can say that I like this person because of these things, it means it's in your consciousness. آپ کو فلاں چیز کیوں کرنا پسند ہے اور فوراً سے آپ مجھے بتا دیں کہ I don't like this thing because of this thing, I like this thing because of this thing. So if you without thinking can say that why you behave like this, why do you like a thing like this, why do you hate someone or something like this, and suddenly or without thinking you tell me that it's because of this. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل آپ کا آپ کے کانشیسنس میں ہے۔ دوسرا وہ عمل ہے یا دوسری وہ فیلنگز ہے یا دوسری زندگی کا وہ پرسپیکٹیو ہے جس کے متعلق اگر میں آپ سے پوچھوں کہ why is it so، تو فوراً سے آپ مجھے جواب نہیں دے سکتے یا نہیں دے سکتی، لیکن you think for a while and then recall اور پھر مجھے بتا دیتے ہیں کہ okay sir, it's the reason that I like this thing. فوراً سے نہیں بلکہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں یا پاسٹ میں، بلکہ نیئر پاسٹ اس کو کہتے ہیں، نیئر پاسٹ میں کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کو یاد تھی کہ اس وجہ سے یہ بندہ مجھے پسند ہے، یہ چیز مجھے پسند ہے، اس چیز سے مجھے نفرت ہے وغیرہ وغیرہ، یا یہ میرا کنسپٹ ہے، اس بندے کو اس لیے میں پسند کرتا ہوں ناپسند کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ سو جو دوسرا سوال تھا میرا جس کے متعلق آپ کو سوچنا پڑا اور سوچ کے بعد پھر رسپونڈ دینا پڑا، دیٹ از ان یور پری کانشیسنس، اس کو سب کانشیسنس بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ سیگمنڈ فرائڈ نے پری کانشیسنس کا لفظ استعمال کیا ہے اور لیٹر آن اس کو سب کانشیسنس کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر تھرڈ از unconsciousness. Unconsciousness is that behavior about which if I ask you that why are you doing it so, you may never be able to satisfy me or to give me answer or respond that why are you doing it so. لاکھ آپ سوچیں لیکن you will never be able to justify or satisfy the answer that why you behaved like that. It means that that thing was in your unconsciousness. If you look at the mentally retarded persons, اگر آپ mentally retarded لوگوں کو دیکھیں یا جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں یا جو ذہنی طور پر آسان الفاظ کے معذور لوگ ہوتے ہیں یا جو سائیکو کیسز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان سے آپ پوچھیں کہ why are you screaming، چیختی کیوں ہوں، روتی کیوں ہوں، چلاتی کیوں ہوں، they will never be able to answer you that why they do such things. اصل میں وہ چیز ان کے انکانشیسنس میں ہوتی ہے، انکانشیسلی وہ اس طرح سے کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، جن کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس انکانشیسنس کو معلوم کرنے کے لیے then we take them to the psychiatrist and then after the proper treatment because they know scientifically پھر دیکھ لیتے ہیں کہ what are the reasons then. So یہاں سے جو ایک چیز ہمارے پاس آ گئی کہ whatever we do according to Sigmund Freud they can be placed at 3 levels. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی ہماری رائے ہوتی ہے، جو بھی ہماری اوپینین ہوتی ہے، چاہے لائکس ڈس لائکس کے متعلق ہو، کسی انسان کے متعلق ہو، کسی نظریے کے متعلق ہو، سو بعض چیزیں جن کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں، جن کے پاس ہمارے پاس پروف ہوتی ہیں، they are in our consciousness. اگر وہ ہمیں پتہ نہ ہو لیکن تھوڑا سا سٹریس دے کر دماغ پہ بوجھ ڈال کر پاسٹ ایونٹس کو لنک بنا کر پھر ہم بتا دیں کہ we are doing these things because of these things، تو ان کی پری کانشیسنس میں ہے، ہماری پری کانشیسنس میں ہے۔ اور بعض اوقات ہم ایسا رویہ اپنا لیتے ہیں جن کا ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ why are we doing these things، اصل میں وہ ہماری انکانشیسنس میں ہوتی ہے۔ Now
look at the second one. I think this consciousness is clear to you now. If you have any question, you can ask me. Chat box में अगर कोई सवाल अगर आप नहीं तो chat box में आप लिख लें. I will respond there then. If clear, then just write clear, and I will go ahead then. Thank you. Okay, so it's clear. It will be a great achievement कि अगर आज के दिन में ये concepts आप लोगों को बिल्कुल clear करके समझा दूँ. I will be really happy. So these are 3 levels of consciousness. अब structure of personality को देखते हैं. In personality, what is personality का definitions बहुत ज़्यादा है, लेकिन how we respond in different situations, that is our personality. Situations में हम किस तरह से respond करते हैं, अगर ये एक angle है, how we look, how we talk, how we behave, how we respond, these 4 things when joined together, it makes our personality. लेकिन ये तो जनरल डेफिनेशन थी. अब सिगमंड फ्राइड साहब के एंगल से अगर हम देखें, so he says कि पर्सनैलिटी 3 चीजों से बनती है, या 3 डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि पर्सनैलिटी बनाती है, या हम ये कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को 3 डिफरेंट चीजें अफेक्ट करती हैं. नंबर 1 is called its, number 2 is called ego, and number 3 is called super ego. I request कि आप जो remaining contents हैं उनकी तरफ बिल्कुल ना देखें. I will explain each and every point to the people. Its को कहते हैं हैवानी जिबिल्लत को कहते हैं, या एनिमल इंस्टिंक्ट इसको कहते हैं. हर इंसान के अंदर एक एनिमल होता है. इसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि इंसान, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो he doesn't care about himself or about the others. अगर उसके हाथ में कोई भी डेंजरस चीज आ गई, छुरी वगैरह आ गई, तो अपने आप को भी जख्मी कर देगा, किसी और को भी जख्मी कर देगा. नंबर 1. नंबर 2, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होती है. वो ये नहीं देखता कि मेरे इस अमल से दूसरे को नुकसान क्या होगा, या इस चीज को अगर मैं ले लूं तो दूसरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा वगैरह. Just thinking about yourself. If a person is thinking just about himself, then that person is controlled by its, जिसको हैवानी जिबिल्लत भी कहते हैं या एनिमल इंस्टिंक्ट भी कहते हैं. 2 किस्म के इंस्टिंक्ट्स होते हैं. ये हैवानी 2 किस्म के इंस्टिंक्ट्स होते हैं. वो कौन कौन से हैं? इंस्टिंक्ट्स आर द स्टिमुलस. एक को कहते हैं इरोस और एक को कहते हैं थेनाटोस. इरोस कहते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट और थेनाटोस को कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट्स. लाइफ इंस्टिंक्ट से मुराद ये है कि ये जो इंसान जिसको पर्सनल प्लेजर जो है, यू कैन सी ओवर हियर प्लेजर प्रिंसिपल्स, इसको लेटर देखेंगे, जिसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी वो जो भी काम करता है सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करता है, और जिंदा रहने के लिए या सर्वाइवल के लिए करता है कि मेरे लिए जो चीज जरूरी है, मेरे लिए लाइफ के लिए जो चीज जरूरी है, बस वो मैं करूं, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए. सो इट इज कॉल्ड इरोस. And another one is death instinct. When he start thinking about killing others or murdering others or destroying others, death को सिर्फ death के कंस्ट्रक्ट में नहीं, दूसरों को destroy भी कर लूं, लेकिन मुझे मेरा मकसद, मुझे मेरी खुशी मिल जाए, so that person is controlled by thanatos. अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लेजर के लिए देखता है, अपनी लाइफ के लिए देखता है कि मैं सर्वाइवल कर लूं, मैं जिंदा रहूं, अपनी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूं, और सेल्फिश बंदा हो जाता है, जब जो बंदा सेल्फिश होता है तो उसको इरोस कहते हैं, और जो दूसरों को इवन डिस्ट्रॉय करके अपना मकसद हासिल कर ले, तो इस बंदे को के लिए जो इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड थेनाटोस. असल में इट्स को वो लोग कंट्रोल करते हैं, या उन लोगों को इट्स कंट्रोल करता है जो सिर्फ
प्लेजर प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं। प्लेजर प्रिंसिपल्स ये मुराद ये है कि कौन सी चीज वो है जो मुझे खुश करेगी, कौन सी वो चीज है जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यानी दूसरों का ख्याल रखने की बजाय, दूसरों के मुतालिक थिंकिंग की बजाय जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज ओन प्लेजर, अपनी हैप्पीनेस के मुतालिक जो इंसान सोचता है तो उस इंसान को इट्स कंट्रोल करता है। और इट्स हैज बीन एक्सप्लेन्ड, इट इज द एनिमल इंस्टिंक्ट। ईगो, अब बाज लोगों को तो इट्स कंट्रोल करते हैं, जो दरिंदे होते हैं, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। ईगो वाले लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको रियलिटी प्रिंसिपल्स कंट्रोल करते हैं, यानी इनके अंदर भी वो इट्स है, इनके अंदर भी इट्स है, लेकिन इट्स के अलावा ये लोग सोचते हैं कि व्हाट इज परमिटेड बाय द सोसाइटी, व्हाट इज परमिटेड बाय द लॉ, व्हाट इज परमिटेड बाय द रिलीजन, व्हाट इज परमिटेड बाय द फैमिली, वगैरह वगैरह। यानी ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बिलीव करते हैं कि सोसाइटी ने मुझे किस चीज की इजाजत दी है तो वो मैं करूं, इसके अलावा कानून ने किस चीज की इजाजत दी है उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करूं, इसी तरह मजहब ने मुझे किस चीज की इजाजत दी है वो मैं काम करूं। तो दे आर बिलीविंग इन रियलिटी प्रिंसिपल्स कि whatever the norms, whatever the rules and regulations, I will follow them rather than just following my own mind, my own pleasure at all. So I think now the difference is clear कि ये लोग पर्सनल बिलीफ्स या पर्सनल सेटिस्फेक्शन पे यकीन रखते हैं, और इन लोगों की भी बहुत ज्यादा, अगरचे हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं कि सब कुछ उसका हो जाए, लेकिन दीज पीपल थिंक दैट नो, अगर मजहब ने, अगर सोसाइटी ने, अगर कानून ने इजाजत दी है आई विल डू, अगर नहीं दी है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। सो जो लोग उसूल पसंद होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ईगो। अब सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो इज या इट एग्जिस्ट इन दोज पीपल हु बिलीव इन मॉरल प्रिंसिपल्स। जो मॉरल प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं तो दे आर कंट्रोल्ड बाय ईगो। बाज़ औक़ात मजहब भी आपको इजाजत देता है, कानून भी आपको इजाजत देता है, सोसाइटी भी आपको इजाजत देता है कि आप कर ले, लेकिन आपका ज़मीर जो है, जिसको कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियंस, ये कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियंस है। कॉन्शियस मीन ज़मीर, लेकिन ज़मीर बंदे को मलामत करती है कि नो, अगर ये मैं काम कर लूँ, अगरचे मुआशरे की तरफ से इजाजत है मुझे, लेकिन अगर ये मैं काम कर लूँ तो मेरा ज़मीर मुझे सारी जिंदगी मलामत करता रहेगा। सो दीज पीपल आर कंट्रोल्ड बाय सुपर ईगो। अब एक सिंपल मिसाल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ईगो, सुपर ईगो और इट्स एक ही बंदे के अंदर किस तरह से होंगे। इफ देयर आर two, you should say two brothers, okay, there are two brothers, और कानून कहता है कि इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, चाहे जायदाद की हो चाहे पैसों की हो वगैरह, लेकिन एक भाई जो है दूसरे भाई का हक भी छीन लेता है। इसका मतलब यह है कि जो भाई दूसरे भाई का हक छीन लेता है, दिस पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स, हैवानी जिबिल्लत इसके अंदर है। लेकिन अगर दो भाई मिल बैठकर आपस में फैसला कर ले कि कानून, लॉ, रिलीजन वगैरह कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो चले आधी आप ले ले और आधी मैं ले लूं, सो दे आर कंट्रोल्ड बाय ईगो, बोथ ऑफ देम। लेकिन सुपर ईगो ये है कि दोनों भाई बैठ जाएं, एक कमजोर है और एक ताकतवर है, एक के पास बहुत कुछ है, दूसरे के पास इतना ज्यादा नहीं है। ये जो ताकतवर भाई है ये सोचे कि मेरे पास तो अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, क्यों करना मैं अपना हिस्सा भी इस बंदे को, इस भाई को दे दूं, चलो, क्योंकि मॉरली वो गिल्टी फील कर रहा है कि मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया हुआ है, मेरा भाई जो है कमजोर है, तो चले अपने जायदाद में जो भी हिस्सा है वो भी मैं इनको दे दूं। अगरचे कानून कहता है कि आप हकदार है, ले सकते हैं, मजहब भी कहता है आप ले सकते हैं, लेकिन उसका ज़मीर उसको मौलमत करता है कि नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, आई विल गिव माय ओन शेयर टू माय वीकर ब्रदर आल्सो। सो इस बंदे को सुपर ईगो कंट्रोल करता है। सो some people are controlled by its, some people are controlled by ego, and some people are controlled by super ego. जिनको इट्स कंट्रोल करते हैं दे बिलीव इन प्लेजर प्रिंसिपल्स, जो इनको ईगो कंट्रोल करता है दे पीपल बिलीव इन रियलिटी प्रिंसिपल्स, और जो सुपर ईगो है तो दे आर कंट्रोल्ड बाय मॉरल प्रिंसिपल्स।
नाउ साइको एनालिटिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस को देख लेते हैं. There are these 5 stages of psychoanalytical development. Stage number 1 is called oral stage, जो 0 यानी बर्थ से लेकर 18 या 1.5 years तक जारी है. Anal stage 1.5 साल से 3 साल. Phallic stage 3 to 6 years. Latency stage 6 to 12 years. और जो genital stage है, it lasts from 12 to 60 years. Oral stage is the one 1.5 साल तक जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या है कि वो किसी चीज को मुंह में डाल लें. माउथ से रिलेटेड जो सेटिस्फेक्शन है, देन उनके लिए जो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या है कि वो चीज को मुंह में डाल ले, चूस ले या खा ले वगैरह वगैरह. So at this stage we have to focus on the oral satisfaction of the children. इस स्टेज पर बच्चे को अगर आपने ज्यादा खिलाना शुरू कर लिया, सो लेटर ऑन इट विल अफेक्ट हिज पर्सनैलिटी. अगर कम खिलाया, उनको जरूरत हुई, तो लेटर ऑन आप देखेंगे कि वही चीजें रिफ्लेक्ट होंगी उनकी पर्सनैलिटी में. ये जब हम मुख्तलिफ स्टेजेस को पढ़ लेंगे, वहां पर फिर कंक्लूजन पे जाएंगे, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ओरल स्टेज या किसी भी स्टेज पर अगर आपने बच्चे को डिप्राइव कर लिया, सो लेटर ऑन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ दैट डिप्राइवेशन ऑन हिज पर्सनैलिटी. सो इस स्टेज पर, ओरल स्टेज पर, उनकी जो माउथ से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन है, दैट इज द ओनली थिंग. यानी बच्चा कहता है कि बस जो भी मिले उनको उसको चूस ले या खा ले. एनल स्टेज इज द नेक्स्ट वन. यहाँ पर बच्चे की सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये है कि वो अपने यूरिनेशन यानी पेशाब वगैरह को बच्चा उसको कंट्रोल कर ले. यानी वो अगर छोटा बच्चा है, 3 साल के बच्चे आपने देखे होंगे कि वो अगर उनके कपड़े अगर अपने गंदे ना कर लें तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर उनके कपड़े गंदे रहें या गंदे हो जाएं, so they feel bit distressed. That's why this age is also called anal stage. So cleanliness of the body at this stage gives them the most pleasure. सबसे ज्यादा प्लेजर जो उनको मिलता है किस चीज से, कि वो उनकी बॉडी क्लीन रहे. अगर इस स्टेज पर बच्चे को आपने साफ सुथरा नहीं रखा और ज्यादा देर तक गंदगी में रखा, so later on you will see कि ये बच्चा सारी जिंदगी नीट एंड क्लीन कभी भी नहीं रहेगा, according to Sigmund Freud. लेकिन अगर आपने इस टाइम उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा, उनकी सफाई सुथराई का, टाइम पर, यानी उनको गंदगी में नहीं रखा बल्कि टाइम पर कपड़े वगैरह चेंज करते रहे, so later on you will see कि बच्चा खुद ही अपना केयर करना शुरू कर देगा, and later on you will see he will be or she will be a neat and clean one. Third one is the phallic stage. So oral stage में माउथ के जरिए सेटिस्फेक्शन थी, और सेटिस्फेक्शन एनल स्टेज में ये है कि वो या तो अपने पेशाब वगैरह को कंट्रोल कर ले और या ज्यादा अपने आप को गंदा ना कर ले. फेलिक स्टेज को, इसको एडिपस स्टेज भी कहते हैं. जो इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं, दे नो एडिपस लव. फेलिक स्टेज इज द वन वेयर द बॉय start loving the mother more as compared to his father, and the girl start loving more her father than the mom. यानी जो ऑपोजिट जेंडर है तो उसके साथ एफिलिएशन कायम करना शुरू कर लेता है इस स्टेज पर. 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, सो इट्स द स्टेज, दीज आर डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस. ये वो स्टेज है जहां पर अगर बच्ची हो तो वालिद साहब के साथ उनकी ज्यादा एफिलिएशन होती है, और अगर बच्चा हो तो माँ के साथ उनकी एफिलिएशन बहुत ज्यादा होती है. सो इफ दे रन टुवर्ड्स यू, सो गिव देम लव एंड कीप देम क्लोज टू योरसेल्फ. क्योंकि अगर इस स्टेज पर माँ ने बेटे को और वालिद ने बेटी को टाइम नहीं दिया, इट विल be reflected in her later life very prominently, very clearly. इसके रिफ्लेक्शन फिर आपको नजर आएगी. वो जब हम आखिरी स्टेज पे जाएंगे वहां पे फिर कंक्लूड कर देंगे कि किस तरह से. So it is the stage where they tends to go into the arms of the opposite gender, लेकिन पेरेंट्स के अंदर. अब लेटेंसी स्टेज कौन सी है? लेटेंसी स्टेज वो है 6 to 12 years, जहां पर बच्चा माँ की गोद से और बच्ची बाप के गोद से निकलकर
اپنے اپنے جینڈر کے ساتھ مکس ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور دس اسٹیج از آلسو کالڈ گینگ اسٹیج. گینگ اسٹیج ان دا سینس کہ جو بچے ہیں اگر بوائز ہیں تو گھر کے اندر یا محلے کے اندر جو بوائز ہیں تو ان کے ساتھ مکس ہونا شروع کر لیتے ہیں. اگر لڑکیاں ہیں تو وہ اس اسٹیج پر وہ لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا شروع کر لیتے ہیں. So that is, it is called the latency stage. Now over here you can see another thing also کہ اس سٹیج پر اپنے بچوں کو اتنے زیادہ آپ ریسٹرکٹ نہ کریں کہ وہ کسی سے نہ ملے، کیونکہ اگر اس سٹیج پر ان کو اپنے جینڈر کے بچے نہیں ملے later on it will also be reflected in his or her life. The last one is genital stage. Genital stages from 12 to 60 years and it is the one. یہاں پہ دیکھیں اپوزٹ جو جینڈر تھا تو ان کے ساتھ ان کی افیلیشن زیادہ ڈیولپ ہو رہی تھی، اور یہاں پر جو سیم جینڈر تھا تو ان کے ساتھ افیلیشن ڈیولپ ہو رہی تھی. جینیٹل اسٹیج از دا ون. یہاں پر ونس اگین یہ جو اسٹیج ہے یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور جو بوائز ہیں تو دے لک فار دا اپوزٹ جینڈر، دا گرلز، اینڈ گرلز لک فار دا بوائز، and in their company they feel more satisfaction. یا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی کمپنی میں بیٹھ جائیں. اسی طرح سے اس سٹیج پر کسی بھی سٹیج پر کوئی بھی چیز اگر مس ہو گئی ہے it is reflected over here. کس طرح سے؟ اگر کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا، اگر ان کے جو زبان یا ٹیسٹ کی سیٹسفیکشن تھی یا ماؤتھ کی جو سیٹسفیکشن سے اگر نہیں ہوئی تو اس سٹیج پر it will be reflected clearly. اس طرح سے اگر اس سٹیج پر آپ نے نیٹ اینڈ کلین بچے کو نہیں رکھا it will be reflected at this stage clearly. اس طرح سے اگر ماں کا پیار نہیں ملا بیٹے کو اور بچی کو باپ کا تو یہاں پر دیکھیں گے کہ they will not be able to know how to love them. اور لیٹنسی سٹیج پر یہ ہے کہ اگر ان کو پراپر دوست یہاں پہ نہیں ملے تو اس سٹیج پر دیکھیں گے کہ اب child will be hesitant, confidence level ان کا بہت زیادہ لو ہوگا, and they will be unable to become more social. Okay, see you after 10 minutes نماز وغیرہ پڑھ کے. So we will be back at 6:50 inshallah. Thank you.